तो जब ये कुछ फेस पे लगाती है तो वो डल पड़ जाता है, बिल्कुल ही आटा मला हुआ लगता है। तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम कहते हैं जो मर्जी मेकअप कर लो लेकिन चेहरे पे कुछ नहीं लगाना। Look at that color. Isn't that beautiful? उफ अल्लाह, ये तो बिल्कुल वो कलर है जो हमें वो लिपस्टिक का पसंद है। So and they're very easy to use. इनमें ऐसा fall out नहीं होता जैसे कोई जैसे ये Be Perfect वाली गिरती हैं. She's done a really cool thing with her palettes as well. So this is the Desert Dusk. बहुत अच्छी इसकी जो आई लाइनर है खुदा का, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। अभी ये लेकर आई है हमारे लिए, ये देखें, ये यूज करने के लिए। लेकिन जो हुदा के आई लाइनर हैं वो बहुत हमें पसंद है, लेकिन वो 2-4 दफा इस्तेमाल करो तो बस खत्म, उसका तो हमें घड़ा चाहिए। तो ये है कि वो एक दफा हम लगाएं तो 2 दिन लगा रहता है, तो हम उस पर बहुत खुश हैं कि हमारे पास वक्त भी नहीं होता, और एक ऐसी चीज है जो स्मज भी नहीं होती, खराब भी नहीं होती, और वो चुभती भी नहीं। बास चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने टार्ट की जो थी वो यूज की थी, टार्ट का मुझे ट्यूब में आती है, वो हमें बहुत अच्छा लगा था, उसका कलर भी बहुत अच्छा लगा था। क्या है वो, बताओगी साथियों को? Tarte ka? I don't know what it's called. It's like a tube eyeliner. I think it's discontinued. The clay paint eyeliner, I think it's called. Look at these, Mama. Look at how pretty that is. So see how like brown people friendly these are? Very pretty. So that's the rose gold remastered. And this one, I think ये वाली मैंने पहली दफा आज जिंदगी में खोल के देखी है। मैं किसी को बता रही थी कि मेरे पास सारी हुदा की हैं, लेकिन मुझे भूल गया था कि ये वाली भी है मेरे पास। So this one, and I was blown away by how pretty this is. चेहरा दिखता है, wow, look at that. रंग देखें, और ये बहू की पसंद की है, वो तो दीवानी हो जाए, वो ये सारे रंग लगाती है, बहुत प्यारे। तो बेटी को जो है ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, डीप डीप ब्लू, वाइब्रेंट ब्लू, डीप पर्पल, ये उसकी आंखों पे बहुत सूट करते हैं, बेटी के मोटी मोटी आंखें, और बहू जो है उस पर ये पेस्टल कलर से जो है बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे शेड्स। Yeah, so these aren't colors I would probably wear. I don't think you'd even see them on my skin, to be honest. लेकिन इसमें देखो ना डार्कर भी तो है। Yeah. हाँ। लेकिन ये जो वो कहते हैं मैं तो लगा लूं। नेचुरल ग्लैम। नहीं, मैं नेचुरल ग्लैम करती ठीक हूँ। So ये वाला नेचुरल ग्लैम जो है। So तो हाँ। I thought it was वापस नहीं जा so रही। pretty. Oh, okay. चलें ठीक है, ये लें, yeah. You have that one. ये हाल है इसका। This one's the Mercury Retrograde palette. This one's a bit of her more, I think, vibrant, कह सकते हैं, colors. ये मैंने मम्मा के लिए भी एक ली थी. So all the palettes जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मैं मम्मा के लिए भी ले लेती हूँ. हालांकि I'm just next door. I feel कि it's important कि she has a good collection too. सारा मेरे लिए भी घसीटती रहती है चीजें, हमें इनकी जरूरत भी नहीं होती, हम हमेशा बोलते रहते हैं इसके ऊपर कि ना लिया करो खुदा के लिए, हमें नहीं है ज़रूरत, हम तो लगाते भी नहीं, लेकिन बस शौक है। तो ये देखें, तो कोई नहीं, बच्चियां यूज़ कर लेंगी, ये तो एक कलेक्शन है, खुशी के सौदे हैं, तो ठीक है। तो ये देखें, ये वाली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, नूड, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। So these, ये मैंने, मेरी एक सहेली ने ये लिए थे आली एक्सप्रेस से, और उसको बहुत अच्छे लगे थे. I think they were like $5 or $6 each. तो I bought them for myself too, and mama and भाभी जी. ये खोला भाई कोई? एक खोला तो था आपने? इसमें से खोल लो कोई। कौन सा खोलूं? ये ऑरेंज खोल लो? कोई भी खोल। That's a pretty color. I think in makeup it's not 100% necessary कि आप बहुत पैसा खर्चें और फिर आपको एक amazing चीज़. Oh, this is, look at that. So these are eyeliners. Oh wow. इतनी दफा मलने में तो आँखें खत्म हो जाएगी। Sorry, hang on. एक लाइन देखें कितनी अच्छी है. मैं बस थिक करने की कोशिश कर रही थी. That's really nice, isn't it? तो ये eyeliners हैं। It's हांडियाँ. नाम? हांडियाँ, yeah. Waterproof cream gel liner.
और देखिए कितने कलर्स हैं. This was just so nice. और free shipping भी थी, I think. कितने के थे? I don't know, $5-6 maybe. So this is this brand is called Likely Makeup. This I think is an indie brand. तो indie brand का मतलब है independently owned. मतलब एक बड़ी organization इसको नहीं own करती. I'm not 100% sure, लेकिन I think it is. So an indie brand is something जो लोग own करते हैं. So it's independently owned. It's owned by people. So जैसे for example like if I was to start up a makeup brand and create it myself, it would be an indie brand because it's independently owned by me. तो दिस इज़ द क्लाउन ब्लश पैलेट. ये मेरी एक सहेली ने मुझे कहा था कि ये मेरी पसंद का होगा. एंड बेस्ड ऑन दीज कलर्स आई फील कि दे रियली वेरी मी. द येलो मुझे लगा था कि इट माइट मेक मी लुक अ बिट जॉन्डिस्ड. तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया. लेकिन एज जैसे मैंने कहा कि जो मुझे अच्छी चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो मैं मम्मा के लिए भी ले लेती हूँ. तो आई बोट two. I bought one for me and one for mama. This one's mama's. I don't think उन्होंने अभी उन्होंने नहीं यूज़ किया हुआ. मम्मा ने नहीं यूज़ किया हुआ. लेकिन ये भी बहुत like they're very good quality blushes. बहुत प्यारा पिगमेंट है और ये इतने पिगमेंटेड हैं कि आप अगर चाहें आप आई शेडो के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. तो हालांकि at the time I knew I would never use the yellow. I thought कि because it's so pigmented I'll be able to use it as an eyeshadow. I haven't used it as yet. लेकिन this is definitely something I think कि अगर आप नए ब्रांड्स ट्राई करना चाहते हैं और आप पसंद करते हैं to venture out into some unknown territory, I think this is a really good palette to have for blushes. तो मैं ऐसी हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड देख के चीज़ ये नहीं करूँगी कि एक ब्रांड ने चीज़ निकाली है तो I have to have it. When I purchase an eyeshadow palette, सबसे पहले मैं उसके रिव्यूज़ देखती हूँ कि कैसे हैं, and then I look at the brand itself. कि a lot of the brands मैंने notice किया people वाह them just because of how expensive they are. मैं एक ऐसे ब्रांड को नहीं सपोर्ट करना चाहती जो that's known to be racist, that's known to be abusive, that's known to have a terrible reputation. These are things I consider when buying a brand. कि who am I supporting? क्योंकि it might not make a big difference to the brand in the long run कि मैं उसकी चीज़ खरीदती हूँ या नहीं, लेकिन I want to feel good about the purchases that I'm making and make a little difference if I can. तो but that's just me. लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ब्रांड खरीदना है जिसकी रेपुटेशन ज़रा क्वेश्चनेबल है तो I mean I'm not gonna judge you. अपनी अपनी पसंद होती है. So okay, so this is Natasha Denona. This is actually my favorite brand. This is my favorite brand because इसकी जो products हैं I feel कि लोग वाह तो करते हैं लेकिन इतनी नहीं करते जितने दूसरे ब्रांड्स के बारे में करते हैं. जैसे कि लाइक पैट मैकग्राथ वाले आपको पता है कि they're always gonna be like, oh my god, I have Pat McGrath, I am the most amazing palette owner in the world. और एक और ब्रांड है Charlotte Tilbury, she makes good stuff. लेकिन at the same time I feel कि जब आप उसके ads देखते हैं she's kind of really pushing her products onto you a lot, whereas Natasha Denona की जो marketing है it's just you get one email a fortnight saying look at this stuff, and I prefer that kind of marketing over getting something like every 2 to 3 days saying कि आप ये try करो और आप 40 से 20 लगने लग जाओगे. Like I don't, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं personally पसंद. तो Natasha Denona is actually my favorite brand, and that's because इसके eyeshadows I have found to be the easiest to use और इनका fallout नहीं है बिल्कुल. तो this is in Australia ये वाली जो है this is the smaller palette. This is $100. This is, I'll show you. So this is the Sunrise palette and this is the expensive one. This is the $200 Sunset palette. And then the next level up from that is उसकी जो यहाँ नहीं रखी हुई लेकिन it's her I think it's a $380 palette. Okay. I have the purple blue. That's her, I think, most expensive palette that she makes. And as far as spending that amount of money on a palette goes, I think शौक उठा था तो ले लिया, लेकिन I wouldn't spend that much money on a palette again because it's just फिर शौक उठेगा इसका शौक उठता ज़्यादा है सोता कम है तो well I thought
because it was the start of lockdown, or everybody was talking about makeup for some reason. I think the people I was surrounded by. This is the Sunrise palette. This is their smaller palette. This retails for about $100 in Australia. And her shadows are consistently good. कि आपको पता है कि अगर आप पैसा खर्चेंगे, if you're gonna spend the money, you're gonna get good value for the money that you spend. ये नहीं होगा कि आप लेयर पे लेयर लगा रहे होंगे और कलर ही नहीं दिखेगा, और इसकी फॉल आउट भी नहीं होती. तो अगर आप लगा रहे हैं, आपको पता है कि ये आपकी आंख के नीचे नहीं गिरेगा, आपको कुछ नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है आंख के, जैसे वो पैड्स होते हैं ना ज़रा एक्सट्रीम मेकअप वालों के लिए, वो जो लगाते हैं. तो हर कलर आप नोटिस करेंगे कि these, even if an eyeshadow palette doesn't have any darks in it, मैंने individually black eyeshadow खरीदा हुआ है. तो if I was to use this eyeshadow palette, I wouldn't use it just with this, I would use it with black. So all these colors would be in addition to the black that I apply, क्योंकि मैं बहुत black लगाती हूँ अपनी eyes पे. I feel कि अगर black ना हो तो it doesn't complete the look. लेकिन this color, for example, this and this. So if you see these three colors, so they're very smooth, they're very pigmented. So after the Sunrise palette is the Love palette. I think this is my most used. The Natasha Denona palette. Can you tell? Almost खत्म होने वाली है. So ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है. मुझे pinks और जो like dark colors है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. So look at that. Look at how pretty that is. It's a very solid color. Yeah. For something like this, I probably wouldn't use a lot of black. Like I would just use this Very on pretty. the Very like a creamy look. Yeah. तो Very pretty. उसके shadows जो वो अक्सर उसकी videos होती हैं Natasha Denona की, वो कहती है cream to powder formula है. I don't know which ones have the cream to powder formula. So this is the $200 palette. This one's the Sunset. I'll show you the difference between the Sunrise and the Sunset. तो ये वाली मामा की है. So this has like a nice leatherish finish. It's a heavier palette. This one's plastic and metal. And आप देखेंगे कि pan size भी बड़ा है. तो अक्सर comparisons नहीं लोग दिखाते कि जो $100 $200 palette में क्या फ़र्क है. Pan size बड़े मतलब eyeshadow भी ज़्यादा मिलेगा. So I don't know if there's a difference in the quality of the shadow because I'm not that much of an expert. Lekin like I would probably not buy these colors if I was personally. Oh wow. So the yellow. So let's compare that to the $100 yellow. So there is a difference. There is a difference. There's